So what's the plan, bro? I'm planning a lunch. Go to the next dhaba and sit there, na? Dhaba or different dhaba Are we riding all the way to Narkanda? later on because one of our rider is not well. Acha, what happened? I have no idea. I can't watch For the first time riders, बहुत दुखती बाबा. अच्छा अच्छा. बहुत. ये हमारा पीके है पीके. बस जब गिरा दे बात चले. अरे कुछ तो खा रहा था मैं वो भी गिरा दिया रे. मैं यहाँ मैं क्या खाऊं और क्या. How's the heat, guys? The heat is raining like sun. The sun is just raining on us. It's like terribly hot. It is fucking hot. Shit. So We have sweat and unnamed pieces. So Ishan bhai, how are you feeling? Very hot. Yes, how's the heat? Hi, sir. देखा तू बघू ते काय असतं. मेरी मम्मी को पसंद नहीं है तू मेरे को हत्ता भी तक यार अभी अपन में पास वाला ढाबा पकड़ रहे हैं. नहीं बहुत ठीक है पास वाला ढाबा पकड़ रहे हैं. पूरा लाल हो गया था. एक करनाल वाला ने वेरी सेंसिटिव अच्छा. ओह माय गॉड यू वेरी अभी 50 सेंसिटिव बात मेरी है उसके कुछ लोग आप पता ही कहाँ से आता है. ऐसा ये ऐसा आजा मुंबई वालों को मना नहीं करते. पहले वाला स्टेप अच्छा था. हाँ. तुला माहिती आहे तू जेवढ्यात जास्त खातो ना. कैसा है भाई पराठा? अच्छा है. रात्रों पे 9 दिन व्रत रखता हूँ. हफ्ते में 4 दिन नॉनवेज नहीं खाता. ठीक से छूना. घाट्स पे अच्छा चला रहे हो आप? मेरे को बहुत प्रैक्टिस है. हाँ, आ गया. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा. अच्छा. अभी नहीं है. हमारे साथ मस्त काट रहा था. हाँ. कार चला था. अच्छा. तुम लोगों ने बाइक क्यों नहीं ली? मैं घर से निकला ना सुबह हाँ. 2 घंटे में मार्शेज घाट और 3.5 घंटे में उल्लासनगर आता. हाँ. मेरे अच्छा. पास 5 बाइक है. मैं यूज़ नहीं करता कुछ. अच्छा. So guys, we are headed to Narkanda. I hope the people, the other guys are waiting for me there. And from Narkanda we'll be heading to Chitkul. That is the destination for the day. We have already booked hotels at Chitkul. Actually, I couldn't maintain enough speed on these mountain roads, so the other guys have gone past. But they said they will be waiting for me at Narkanda.
We have just reached Narkanda. Actually, the plan was to reach Narkanda much earlier. There is no destination at all. Sorry? There is no destination at all. Yeah. So actually, the morning we started with the plan of hitting Chitkul, the last Indian village before the Chinese borders. We don't think we'll be able to make it anymore. Because we are exploring right now. Because the thing is, it took an eternity to pull into Narkanda. Yeah. We started at 10, right? Much before that. Early. We started about 8 o'clock. 8:30. And by the time we did Narkanda, it's already 4. We would be reaching Rekongpe at 9. Rekongpe. Yeah. And if we don't reach, we're going to at 9 o'clock wherever we are, we're going to camp there. वेज वाले पनीर तो नहीं मिलेगा, वेज में कुछ खरीद लेंगे. नॉन वेज वाले अपन बोनलेस चिकन डिब्बा विब्बा कुछ है तरह. So guys, what's the new plan? Rampur. So we're gonna have lunch at Rampur, yeah? Yes. मला गॉगल दे ना. हाँ, Arey, what's the new plan? न्यू प्लान इज जस्ट गो अहेड. So no more Chitkul, right? वी माइट और वी मे नॉट. डिपेंड. निशा याच्यात काय टाकायचं मॅप मध्ये? काही नाही टाकायचं. मॅप मध्ये ना टाकायचं असेल ना तर फक्त रेकॉंगपिओ टाकून ठेव. त्याच रस्त्याला सरळ जायचं. So what's at Rekongpo, by the way? रेकॉंगपिओ इज लाइक वन ऑफ द विलेज. Uh-huh. It is famous for its apples. Apples, Kinori okay. apples. And you can find out apple farms. It constitutes for around 40% of the apple production. Entire see. Kinnaur district. I see. And how far is it? Rekongpo? RekongpiO is 150 kilometers from here. 150 kilometers. So it'll take another 5 to 6 hours, right? Yeah, but we'll take a call once we cross the Kinnaur. Kinnaur Valley. So are the roads very good? डालेगा ना कहीं तो सब जगह मैं फूकते ही दिखाऊंगा तुझे. से चलेगा? रुकने के बाद मैं फूकना चालू करता हूँ. चलेगा, पर तू डाल देना, ये भी डाल देना उसमें. चलो चलो. और गाइस, सो Area to please. Listen. एक्चुअली अपना ट्रिप अभी आज यहाँ से चलेगा. Let's सो द लैंडस्केप, जो फोटोज वोटोज खींचना है, जो फोटो सेशन करना है, वो यहाँ से चलो. दिस इज द प्लेस. यहाँ से आगे जाओ तो वो हाटू पिक है. ये हाटू पिक करके जाना है क्या? एक मंदिर है लकड़े का बना हुआ. फटती है 7 किलोमीटर रास्ते में ही फटती है आधी. तो चढ़ा सिर्फ चढ़ा ले. अगर कहीं जाना पहुँचना नहीं है तो यहाँ से फिर वहाँ से आके और जा सकते. वापस 6 बजे यहाँ पे रहेंगे ना तो भी अपन 9 बजे तक खींच सकते हैं. बाईक से मंदिर तक बाईक जाती है. करना है हे इकडून वरती ऑटोमेटिक. आणि तो 7 किलोमीटरचा जो रस्ता ना, जन्नत आहे जन्नत. चलो ना मग. इथे तू आता 4000 फुटावर आहे. त्या 7 किलोमीटरवर तू 8000 फुटावर. चलो मग. डायरेक्ट असं उभा गाडी जाईल ना. गाडी मंदिरापर्यंत जाईल. सगळे जातात. चला मग. चला ना. कारण हे बघ, तसे आपल्याला कुठे पोहोचायचं नाहीये. पण मग साला पण आज 9 वाजेपर्यंत गाडी खेचावी लागेल ना मला. पर उसमें किन्नौर में होगा. अब उसमें क्या है? किन्नर जो वो वाला रास्ता. नहीं हाँ वो वो चाहिए. अंधेरे में जाएंगे. वो चाहिए. जाएंगे पर अंधेरे वो में. चाहिए. फोटो नहीं निकलेगा अंधेरे में. ये वाला. चलो सीधा रामपुर. वो वाली रास्ते की क्या बात कर रहे थे? वो किन्नौर वाले का है. क्या है वो? द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रोड. अच्छा. बाय द वे, तुम लोग नारकंडा पहुंचो ना, ये जो रास्ता था ना, मैंने तुम लोग को पहले बोला नहीं क्योंकि तुम लोग भगाते नहीं थे. वो रास्ता बदनाम है. हर रोज खून चाहता है. एवरी डे एक गाड़ी तो भी खाई में जाती है और किसी ना किसी का खून तो वो रास्ते पे लगता ही लगता है. अच्छा. और उसके बिना उसका होता नहीं. अगर आप वो बीच में गाँव के अगर नाम देखोगे, फांगू वगैरह, तो ये जो लोकल लैंग्वेज है ना, दिस ऑल आर द वर्जन्स ऑफ द डेविल्स. एंड पीपल बिलीव दीज आर द पीपल हु आर लाइक एंसेस्टर्स ऑफ द डेविल्स. आत्माओं के बहने. आत्माओं के लोग हैं. यानी जो कोई आत्मा बना था, फिर आत्मा गिव अ बर्थ टू समवन. सो ये इसीलिए फॉर कुफरी छोड़ने के बाद नारकंडा जब तक 3 किलोमीटर नहीं था, एक भी होटल नहीं था. कहीं था नहीं कि स्टे अवेलेबल, कोई रहता ही नहीं. वो गाँव वाले छोड़ के कहीं कोई रहता ही नहीं. नो वन स्टेज. संभालो गाड़ी है. So the group is busy discussing the details. Narkanda is like a popular halt for people riding to Spiti. The stretch from Shimla to Spiti is a very tiring and hectic one. Most travelers try to break their journey at Narkanda. We don't have much time to explore Narkanda. We are planning to make headway to Rampur. चले guys. Rampur, right? Yes. कल बैठो बाइक पे, कल आराम से जाएंगे. चलो. How's the Josh?
Jaipur, and the feeling is so magical. I'm not sure if that is the river Satluj, but the view of the river from this road is simply amazing. Wow. Look at those mighty mountains here. Absolutely magical.